Madam, this is like automated ambu bag I devised for real patient. Then I started using it. It's an automated ambu bag. Yes, For a I real designed it for patient. the first time in 2018. Mahindra spotted that automated. Yes, but that was the first time I made in 2018. So you can hear that he's slightly breathing, but he's not in distress. So as you know, the SICO scenario, can't intubate and can't oxygenate. Earlier it was can't ventilate. So it's basically you have to do first laryngeal handshake. You find the larynx, and after that you stabilize the larynx with 3-finger technique. This is a finger scalpel bougie technique. Yes. You stabilize, never leaving the space, pivothyroid space, and then you give 11 number plate. So this is the neck thread. This is the cricothyroid membrane. So like he is breathing. अभी तो हवा नहीं निकल रही, वो अंदर ही जा रही है, जब हम छेद करेंगे तब निकलेगी, है ना? ये तो खुला हुआ है। नहीं, ये खुला जगह फॉर द नीडल टू pierce. ट्रेकिया तो लेयर तो नीचे है ना? अभी तो हमें cricothyroid membrane करना है. We are not nothing to do with the trachea. supra this thing मतलब. You will see when we will reach the membrane. Basically, our point is like where we are in the right place or not. So when we reach the cricothyroid membrane, air will escape and we will hear the hissing sound, or the oozing sound. What I meant was that the air is below the cricothyroid membrane. Suddenly, listen. When you dilate with the cali, escape over here. So this is our simulation. Is it meant to be a vertical incision? Both are recommended, ma'am. Horizontal and vertical. Both incisions are recommended. So then you dilate with your finger, right? If you can feel posterior tracheal ring, this is good enough additional point. But since air is escaping out, so that is also a point that we have entered we have reached the airway. Then you insert the bougie. Never leave the space again. And but blood is a very good lubricant. So in real scenario, you don't have to look for jelly or paste tag because this is a very emergent procedure. Very, very emergent. What size do you use? 6, ma'am. Minimum 6. Or you can use ET tube also. छोटी साइज है. हाँ नहीं. It will require a little bit force. And then to again confirm, because sometimes it goes into subcutaneous tissue also. So again to confirm, we have provided lungs. We inflate. So that confirms and you give peace of mind and you are sure that it is in the right place. But sometimes it goes into subcutaneous tissue and you feel that it has gone in the cricothyroid space and it has not, and again that problem. So just to be sure, we have provided two, indications. One is the escape of air, second is the lungs. So these are not allowing other mannequins. नीडल भी दिखा दीजिए. नीडल तो मैडम ये नहीं फिर अब बच्चा है, उसमें हमने नीडल करना है. ये दो. Separate the again larynx and then go at an angle of 45 degree quarterly and keep going and keep aspirating. So once you aspirate air, you remove the syringe, take out the stylet, slide little bit further inside and connect with the jet insufflator, whatever, all that 4:1 that syringe and ET tube jugaad, what we have usually. But in adult, this definitely leads to peri intubation anastomy, hypercarbia. So I generally don't accept needle type in adults. But that will create tension pneumothorax. Like unlike other mannequin, you have to pump manually. So कहाँ से हवा खींच रहे? say. So I will be doing needle decompression on the right side, but chest tube on the left side. No, I'm एक साइड में नहीं आ सकता ना मैं दोनों. नहीं मैडम ये कह रही हैं आपने जैसे वाली इससे कहाँ पे? Recommendation either you go in the fourth or the fifth window, just and get to be there light. I can demonstrate with the. So you can see in this mannequin oozing sound. ऐसे करते हैं. This is second, third, and fourth. This interior.
can hear moving. Could you hear, ma'am? Yeah. And you, if you want to do with this, Normally what we would do is we would attach the saline syringe. नहीं डॉक्टर साहब सुनो, नॉर्मली व्हाट वी डू ना, जैसे हम ये डाल रहे हैं ना, इसमें हम सेलाइन सिरिंज यहाँ अटैच करेंगे ताकि हम ज्यादा अंदर ना चले जाए, एंड वी कीप एस्पिरेटिंग एज वी पुट द नीडल इन. you can be supporting like I am demonstrating, हाँ जी, हाँ like जी. what you do, नहीं, नहीं. because the needle has to be 8 to 9 centimeter Right, long. right. This is just for demonstration हाँ, purpose. बिल्कुल ठीक है. This is only 5 centimeter, and the cannula for training tension pneumotomy is not sufficient. Yeah. Neither it is that too strong. True. So we have to have a tension pneumothorax catheter basically, and it has to be 8 to 9 centimeter long. ये साइट इज एक्चुअली क्लोजर. यहाँ तो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं जाएगा, यहाँ पे चले भी जाएगा, इसलिए बिकॉज यहाँ पे द टिश्यू इज लेस ना. You stop there. We stop or it stops on its own? It's on its own also, but you have to be careful. posterior wall पे ना चले. Machines are machines, ma'am. Sometimes they don't stop. So नीडल में ना एक फिक्सिंग के लिए भी होता है कि ज्यादा अंदर ना जाए. हाँ, ये है मैम. So you will aspirate blood. Yeah. Blood or fluid or nothing. Maybe when you shock, you will not. So you. ये काम तुम. हाँ. Then you connect it, ठीक है. and then you can start anything you want. ठीक है. Fluid, platelet, Blood, whatever. blood, Right, whatever. right. And you can set the blood for ED. On its own also, but you have to be careful. Posterior wall पे ना चले. Machines are machines, ma'am. Sometimes they don't stop. So नीडल में ना एक फिक्सिंग के लिए भी होता है कि ज्यादा अंदर ना जाए. हाँ, ये है मैम. So you will aspirate blood. Yeah. Blood or fluid or nothing. Maybe when you shock, you will not. So you. ये काम तुम उनको दो यार. तुम ये फिक्स करो. तुम करो. वहाँ असिस्ट कराते तो यहाँ क्यों कराते? So we have given fixer also, but I have given the stitches rather than the fixer because fixer can come out. So you have to apply. हाँ, तो 16 का करवाना ना एक ही टाइम में. आपके पास ह्यूमरल का भी है? नहीं, ह्यूमरल एक्सेस के लिए डॉक्टर साहब आपके पास. You will get the giza feeling, no stop. You apply slight pressure. Shoulder का भी है मैम. नहीं, ह्यूमरल का है, आप लाए क्या? जी मैं aspirate. शोक में ना पेशेंट है. क्योंकि फिक्स भी तो फिक्सर पेशेंट शोक में इसलिए काला लगा रहा है. लगाओ. सर हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो ब्लैक ब्लड. ठीक है, कुछ भी. Yes, wow. You have to aspirate slowly, otherwise you won't get anything. बहुत बढ़िया. वो गंदे से बल को टो 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 कर करके हाथ मर जाता है. So you feel the carotid वेरी नाइस. and एक तो पहले फील करेंगे. feel करना. सर इधर करना पड़ेगा. एक प्रोसीजर सर करेंगे फिर ट्राई कीजिए. हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है. Yes ma'am. हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है. टैं. ओके, कैमरा तो बहुत ही अच्छा फील है. Madam, let's actually my बढ़िया. Oral is really very good. या sir, there's no danger of damaging any vital structure. यस. सबसे खतरनाक सप्लीमेंट लगता है मुझे. Wow, pneumothorax is that. I have never been a great fan of it. हाँ, then you can't give any pressure. You can't. ऊपर बोन पड़ी हुई है उसके. मैनेजेबल कॉन्टेक्ट. ये तो बड़ा बढ़िया है. ये भी ये थोड़ा मैडम ये भी वो दे देंगे. जोर से धड़क भड़क रहा है फेमरल का. बहुत बड़ा जोर से. तो टेक्निकार्डिया किया हुआ सर ने. हाँ तो ठीक है ना, शॉक में है ना बेचारा. पर इतनी अच्छी फील ना होगी वैसे बड़े नहीं. So madam, this sternum and the clavicle. And we like what ATLS. तो हमने फील नहीं करा. ये लो मैम. हाँ, ये दोनों ट्रायंगल नजर आ रहा है. ठीक है. नहीं नजर And आ रहा फिर भी. like ATLS like एपेक्स कहाँ गया इसका? ये आपकी the base is by the clavicle. हाँ नहीं, वो तो ठीक है. एपेक्स तो यहाँ तक जा रही है मेरी. So remove the needle, stabilize the guide wire, dilator. ब्लड वापस में So डाला. I'll just demonstrate for you the complete procedure, but in reality we will just after this we will simulate up to the नहीं पूरा दिन सिखाना बच्चों को. and फिर तो cost will go up. doesn't matter, we have these disposable. Because जब तक हम पूरा
पूरा नहीं सिखाएंगे ना, होता नहीं, सेल्टिंग का टेक्निक भी नहीं समझ आती, जिन्होंने नहीं करा हुआ सेल्टिंग का, नहीं तो हम तो कर करके मतलब नींद में करते हैं, बट इस बंदे ने So like here there is appraisal. फ्लेयर चेस्ट वाला है इसका, Yes, ma'am. So ग्रोनिंग नहीं है प्रेसिंग सब कुछ मैक्सिमम परफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं सब कुछ है, बना देंगे मैडम आपके लिए, कुलदीप को बनाना नहीं फ्रैक्चर नहीं मैम, इट्स नॉट मस्ट लाइक यहाँ मैडम देयर फ्रैक्चर इज If asked, we can see what do you see on the screen. So this is the liver, this is the diaphragm, this is what we see, and this is our concern, pneumothorax, right? So we can, if you want to confirm. This is the curvilinear probe. नहीं मैडम, this is a simulator. Okay. ये तो वैसे ही है मैम, ये नहीं है, because that is the blind do scenario. Chest X-ray. If you see this in a patient chest trauma with hypotension, or maybe you can make it pulseless also, right? So what will you We do? go कर सकते हैं 60/40, 60/40. हाँ, लो भी कर सकते हैं मैम. So what will you do? So this is like, and therefore tension pneumothorax. You want to give a tension pneumothorax scenario. So then you can make. We have valve पीछे मैम, इसमें ना ब्रेस्ट साउंड भी है, वेंटिलेटर है ना मैम, आवाज बंद कर. हाँ बंद करो फिर मारना तो आवाज शुरू हो गया. So these are distended vein. ये इसके अंदर थी जो नहीं मैम, आपने ये अलग से फ्लैप लगाना पड़ता है. हाँ अच्छा Can you see? मैम, इधर से आपको आना पड़ेगा. ये नजर So now this is a patient of chest trauma, come with rapidly deteriorating, chest rhythm and very high respiratory rate, and this is what you see. Immediately you see. So what is this? Tension pneumothorax. सर ट्रेकिया And इसमें पाल्पेट होगी. नहीं मैम, ट्रेकिया तो बट डेविड नहीं होगा मैम, फिक्स स्ट्रक्चर है ना. फिर that will, the cost will go up. We will make that. नहीं, I'm just asking what to be. X-ray. So there is a collection of rising level. So what do you suspect? Pneumothorax to prepare for the chest tube. Right. Then This X-ray has been taken with the patient in the vertical sitting position. this is for